Hello everyone, I'm back again and today I'm going to take classes or I'm going to teach you the Indian spices name in English and in Kannada how you're going to recognize it. I'll be just showing you the pictures of those Indian spices on the screen and I will tell you their Hindi names also. So if someone is asking you, I know in Karnataka that much Hindi name of the spices is not so famous, but still if someone is asking you, you can correlate and you will be able to identify and will be able to answer that person. तो चलो अब जल्दी जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं. तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास cardamom. तो cardamom is basically into two. It is green cardamom also and black cardamom also. It's not cardamom. Okay, remember many people say cardamom. तो cardamom. It's a one word with no gap at all. Cardamom. तो ये इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? बड़ी इलायची या छोटी इलायची, हरी इलायची या काली इलायची. ठीक है ना. हरा मीन्स ग्रीन एंड काली मीन्स ब्लैक. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज फेनल सीड्स. तो फेनल सीड्स जो है उसको हिंदी में कहते हैं सौंफ. फेनल सीड्स इन इंग्लिश एंड सौंफ इन हिंदी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्यूमिन सीड्स. Cumin seeds are called jeera in Hindi. Okay, I think in Kannada they are called jirge. I'm not sure. Please don't kill me for my Kannada. I'm still learning phase. Now next is carom seeds. तो carom seeds को हिंदी में कहते हैं अजवाइन. Carom seeds, अजवाइन. Carom is a carom board which we play, right? Now next आ जाता है asafoetida. Asafoetida, some people will say, and some people will Asafoetida. Okay, it's not Asafoetida or Asafoetida, it's Asafoetida. Okay, Asafoetida. इसको हिंदी में कहा जाता है हींग. And I don't know, it's called हींग same in Kannada also or not. I have no idea at all. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बे लीफ. तो बे लीफ को हिंदी में कहा जाता है तेजपात का पत्ता या तेज पत्ता. तेज पत्ता या तेजपात is one and the same thing. Okay, people just speak it differently. Okay, so in English it is called bay leaf. Okay, now next and last is kasaya bark. तो खसाया बाग को चाइनीज़ सिनेमन भी कहा जाता है या सिनेमन रोल भी कहा जाता है. सिनेमन रोल स्टिक्स भी कहा जाता है. सिनेमन स्टिक्स भी कहा जाता है. आपने बहुत बार सुना होगा सिनेमन स्टिक्स नहीं. तो इसको बेसिकली ये दालचीनी है. ठीक है ना. तो दालचीनी इज़ द वन विच इज़ बीइंग कॉल्ड इन हिंदी एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड खसाया बार्क और चाइनीज़ सिनेमन ऑन सिनेमन स्टिक्स. ठीक है, एनी वन ऑफ दोज. और इन सब के पिक्चर्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको जो है वो आपको रिलेट कर सके. एंड नेक्स्ट टाइम somebody is asking you in Hindi, you will be able to relate and you will be able to remember and then answer them accordingly. And this is me, Alice Raj. If you like this video, then please do like and share and subscribe my channel, and I am signing off.